जय जगन्नाथ एवरीवन मु विवेक आपण समस्त को इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट को स्वागत जनाऊँगी। तो भाई माने आज आम पढ़ा कौन ना बुलेट रो फास्ट ईयर जो अच्छी 50,000 MCQ सीरीज जो आम ESP प्रोवाइड करी तार यार्थिंग चैप्टर आज आम पढ़ा को चैप्टर ना यार्थिंग चैप्टर आज आम पढ़ा। तो ये जो क्वेश्चन एटा है वन लिनियर टाइप रो क्वेश्चन अच्छी ए वन लिनियर टाइप क्वेश्चन को आज आम डिस्कशन करिबा। तो यार्थिंग रो जो फास्ट वन लिनियरिटी देछि कोन देछि ना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कॉल्ड स्पाइक्स यूज्ड फॉर मेजरिंग एर्थ रेजिस्टेंस आर केते प्रकार ना तीन प्रकार 3 जानि पारलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला डैश इज ए स्क्वायर्ड टू मेजर द एर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग एर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर कोन करा हबो एर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर को यूज करिकि ना टू अवॉइड इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ जो होची ताको अवॉइड करियो कोन ना इंटरफेरेंस को। तो थर्ड रे कोन कहला द एर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एर्थ रेजिस्टेंस को हमें केमिति रिड्यूस करि परिबा ना प्रोवाइडिंग डबल एर्थिंग आमे डबल एर्थिंग प्रोवाइड करी कि यार कोन करि परिबा ना रिड्यूस करि परिबा कोन एर्थ रेजिस्टेंस को हमें रिड्यूस करि परिबा जानि पारलो। तो 4 नंबर पॉइंट कोन कहला हाँ द साइज ऑफ द एर्थ और ग्राउंड वायर इज बेस्ड ऑन द कहा पर बेस्ड कराई ना मैक्सिमम फॉल्ट करेंट कैरिंग थ्रू द ग्राउंड वायर एंड डिपेंड्स ऑन द सॉइल रेजिस्टेंस कहा पर डिपेंड करिवो ना सॉइल रेजिस्टेंस ऊपर मध्य डिपेंड करिवो। समस्त वॉइस क्लियर आछि कि जन चैट रे को जणाओ टिके। तो नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला ना यार्थिंग इक्विपमेंट दैट प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम डैश ना जो आमे यार्थिंग करूचु से यार्थिंग टा हमको को प्रकार रो जो इक्विपमेंट को हम केमिति प्रोटेक्ट करूची कहा पाखरु ना लीकेज करंट पाखरु हमको प्रोटेक्ट करूची यार्थिंग इक्विपमेंट दैट प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम लीकेज करंट थारु हमको प्रोटेक्ट करूची। नेक्स्ट पॉइंट हमको कोन कहला ना आज पर IEE regulations green and yellow color course of flexible cables are recommended from dash ना पॉजिटिव एर्थ जो पॉजिटिव एर्थ रे आमे को IEE रेगुलेशन हिसाब रे ग्रीन एंड येलो को कॉम्बिनेशन कलर कोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल केबल आर रिकमेंडेड फॉर पॉजिटिव एर्थ को जानि पारलो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िबा कोन देछि अकॉर्डिंग टू BIS 30431966 नेचुरल ऑफ अल्टरनेटर इज एर्थ कहा को एर्थ करूची ना सॉलिड एर्थिंग रेजिस्टेंस एर्थिंग ना रिएक्टेंस एर्थिंग आर सस्पेंस कॉइल एर्थिंग ए जो हमर रहला BIS 3043 1966 एटा इंपोर्टेंट पिला माने टिके याको भलसे देखिबे। तो एटा को प्रकार हम याद करूची ना सॉलिड एर्थिंग करूची रेजिस्टेंस एर्थिंग तापर एटा कोन रेजिस्टेंस एर्थिंग रिएक्टेंस एर्थिंग आर सस्पेंस कॉइल एर्थिंग मध्ये प्रोवाइड करूची। नेक्स्ट पॉइंट को जिबा डैश ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिफाई नेचुरल वायर एंड डिस्क्राइब द पॉजिटिव ऑफ स्विच एंड कट आउट केते नंबर रूल कहला ना रूल 32 रे कोन कहला रूल 32 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिफाई न्यूट्रल वायर टा एंड डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ स्विच जो अछि आ न्यूट्रल वायर एंड कट आउट को केते नंबर रूल ना रूल नंबर 32 भलो भाव मन रखियो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रूल नंबर 32 हिसाब रे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर कहार ना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रो रूल नंबर 32 हिसाब रे न्यूट्रल वायर एवं डिस्क्राइब कोन करिवो ना पोजीशन ऑफ द स्विच आ कट आउट रो पोजीशन को रूल ना रूल नंबर 32 जानि पारलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला डैश कनेक्ट्स नॉन कंडक्टिंग
part of system or equipment with earth. कहा से तो ना earth continuity wire connect non-conduction part of system और equipment earth wire जानी पारलो कहा सहित ना earth continuity wire सहित in 3 phase 240 volt 4 wire system neutral wire of switching board is identified by कहा द्वारा ना को कलर द्वारा ना ब्लैक कलर द्वारा जो 3 फेज अच्छी 340 वोल्ट 4 वायर सिस्टम रे न्यूट्रल वायर टाकू आमे को कलर ना स्विचिंग बोर्ड इज आइडेंटिफाइड बाय ब्लैक कलर जानि पारलो नेक्स्ट पॉइंट को जीवा डैश इज used in the form of earth electrode कौन कहले डैश used in the form of earth electrode कॉपर कास्ट आयरन आउ जे आमे काहाकू earth electrode भाबरे यूज करि परिबा काहाकू ना कॉपर कास्ट आयरन आउ जीआई को जानि पारलो तो टिके रिपीट कर दो 3-4 क्वेश्चन कौन कहला डैश ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिक आइडेंटिफाई न्यूट्रल वायर को जो आइडेंटिफाई करूछु ता सहित पोजिशन स्विच आउ कट आउट को सेटा को रूल द्वारा ना रूल नंबर 32 द्वारा डैश कनेक्शन नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ सिस्टम और इक्विपमेंट विथ एयर कहा द्वारा ना एर्थ कंटिन्यूटी वायर द्वारा जो हमर 3 फेज अछि 240 वोल्ट 4 वायर सिस्टम रे न्यूट्रल वायर को आमे कहा द्वारा जानि पारुछु ना को कलर द्वारा आमे इंडिकेट करूछु सेटा हला ब्लैक कलर द्वारा एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डैश यूज इन द फॉर्म ऑफ एर्थ इलेक्ट्रोड रे आमे कहा को यूज करूछु आमे एर्थ इलेक्ट्रोड रे कॉपर को यूज करि परिबा कास्ट आयरन को मध्य यूज करि परिबा ता सहित जीआई को मध्य हमें यूज करि परिबा नेक्स्ट जीवा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर स्ट्रिप इलेक्ट्रोड इज केते ना जो कोन कहला क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर स्ट्रिप जो कॉपर स्ट्रिप हमर रहला से कॉपर स्ट्रिप रो जो कॉपर स्ट्रिप इलेक्ट्रोड रो ता क्रॉस सेक्शनल एरिया केते रहला ना 25.25 mm into 1.6 केते रहला ना 25 mm into 1.6 mm तो एटा मध्य पिला माने बहुत थरो क्वेश्चन रे पकेछि एटा मध्य गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट जीवा which type of material is used to make earthing rods जो earthing rod अछि आमे ताको को प्रकार मटेरियल यूज करूछु ना स्टेनलेस स्टील यूज करूछु गाल्वानाइज्ड आयरन मध्य यूज करूछु ता सहित आमे कॉपर बाउंडेड टू स्टील मध्य करूछु कोन कोन यूज करूछु ना स्टेनलेस स्टील आमे यूज करूछु गाल्वानाइज्ड आयरन मध्य यूज करूछु ता सहित कॉपर बाउंडेड टू स्टील मध्य आमे यूज करूछु हाँ तो भाई मो वॉइस समस्त क्लियर आसुची आउ थरे जणे दियनु टिके हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखो कौन कहिछि ना मेथड यूज टू डिक्रीज earthing रेजिस्टेंस कौन जो मेथड गुडा हमर अछि earthing रेजिस्टेंस को डिक्रीज करिया पई कौन ना यूजिंग मल्टीपल रॉड हम यूज करि परिबा तापर कौन करिया ना प्यूरिंग सॉल्ट एंड वाटर जो सॉल्ट और वाटर मध्य में प्रोवाइड करि परिबा ता सहित लेंथ डिक्रीज एंड डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज जो डायमीटर रो लेंथ अछि डिक्रीज करिबा सॉरी हमर लेंथ रे डिक्रीज करिबा ता डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड कोन करिबा ना इंक्रीज करिबा एटा मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो एई पॉइंट को टिके ध्यान देबे अकॉर्डिंग टू बीआईएस द कोड यूज्ड फॉर डिजाइन installation and calculation of earthing system केते कहला IS कोड 3043 हिसाब रे the code used for design installation and calculation of earthing system कोन कहला installation और calculation जो earthing system अछि आमे IS कोड केते नंबर ना 3040 एटा भल से ध्यान दो पिले माने एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन I03 जो IS कोड अछि 3040 कौन ना 3040 सेटा हमें कोथि पई ना इंस्टॉलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एर्थिंग सिस्टम पई जानि परलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जो नेक्स्ट पॉइंट हमर अछि जीवा नेक्स्ट पॉइंट
इन्सुलेशन फील्ड इट इज प्रोटेक्टेड बाय कहा द्वारा जो इन्सुलेशन फील्ड आमे करूचंदी प्रोटेक्ट आमे कहा द्वारा करूचु ना एर्थिंग द्वारा तो मु एठी पिला माने गोटे पॉइंट तुम मानू कहूची ए जो एर्थिंग टा अछि एर्थिंग रो मेन पर्पस कोन सीटा गोटे क्वेश्चन बारंबार पकोची एर्थिंग रो मेन पर्पस हैला ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करिबा बा हमर जेतिके भी लाइफ अच्छी ताकू प्रोटेक्ट करिया पई बा ह्यूमन बीइंग हो लाइफ बीइंग हो जेतिके भी हमर जीवंत जिनिस अछि तार प्रथम प्रायोरिटी हैला सेमानंकु इलेक्ट्रिक शॉक रु प्रोटेक्ट करबो किए ना एर्थिंग नेक्स्ट हैला हमर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को से प्रोटेक्ट करबो जानि पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा तो कोन कहला जेनरेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमर जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अछि हम जो तार फ्रीक्वेंसी केते भारत रे हला 50 हर्ट्ज हला ता फ्रीक्वेंसी ना 50 हर्ट्ज होची तार फ्रीक्वेंसी जानि परलो बिले तो जो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी अछि हम इंडिया रे तार इलेक्ट जो फ्रीक्वेंसी केते ना 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज होची कोन ना जो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी होची इंडिया रे हला 50 हर्ट्ज आ अमेरिका रो केते हो ना 60 हर्ट्ज एटा को मध्य टिके ध्यान देबे नेक्स्ट पॉइंट को जिबा minimum distance between two parallel plates in plate earthing should be केते बोली कहिची तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेटा याको ध्यान दियो कोन कहिची ना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट जो पैरेलल प्लेट हम जो एर्थिंग गले दीटा एर्थिंग भितरे एठी गोटे एर्थिंग गले एठी गोटे एर्थिंग गले एई जो डिस्टेंस टा अछि एटा केते मीटर रहिबा दरकार एटा केते कहला 8 मीटर एटा 5 रु 8 मीटर रहिबा निहाती आवश्यक जदि आमे लेस देन 5 करिबा तबे एटा ठीक नुहे जानि परलो नेक्स्ट पॉइंट को जिबा इफ live wire comes in contact of material causing then additional current will transfer through कहा द्वारा ना earthing wire जदि if live wire comes in contact of metallic casing then additional current will ट्रांसफॉर्म थ्रो एर्थिंग वायर जदि एर्थिंग वायर थिबो ता देकी से ग्राउंड हे जिवो गुड कंटिन्यूटी ऑफ एर्थिंग गिव्स जो कंटिन्यूटी कोन कहले गुड कंटिन्यूटी ऑफ एर्थिंग गिव्स लो रेजिस्टेंस हम जो एर्थिंग करू सेटा गुड एर्थिंग कोन हबो ता रेजिस्टेंस लो हबो रेजिस्टेंस ता जदि लो हैला तेबे हमर कोन हबो इलेक्ट्रिक जो हमर लाइव इलेक्ट्रिक बा जो शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक हिची सेटा ग्राउंडेड हे जिवो जानि परलो आ जदि रेजिस्टेंस अधिक थिबो से तो पास करि परिबोनी ना करेंट हां तो सॉलिड एर्थिंग इज यूज्ड फ्रॉम द वोल्टेज कोन लेस देन 660 वोल्ट कोन कहला ना सॉलिड एर्थिंग जो अछि इज यूज्ड फॉर द वोल्टेज ऑफ लेस देन 660 वोल्ट 660 वोल्ट से कम को हम सॉलिड एर्थिंग करूछु सॉलिड एर्थिंग यूज करूछु too much current flow through the earth where be cause it as कोन ना very low resistance too much current flow through the earth wire जो बहुत परिमाण रे करंट फ्लो करियो जदि earth wire रे सेटा कोन हबो ना very low resistance थिले कहि परिबो so the best method to remove static electricity from machines is to ground from work कोन कहले टू ग्राउंड फ्रॉम वर्क हैला द बेस्ट मेथड कोन भाई ना रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीन्स इज केमिति ना टू ग्राउंड फ्रॉम वर्क एटा कोडी पड़थिला ना जेवीबी एनएल हेल्पर रे माने पड़िथिला ए शिफ्ट नंबर 1 रे क्वेश्चन ता आसीथिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक सब one touching live conductor of public supply from earthing metal कोन कहले current will flow in earthing कोन कहले one touching live conductor जतले गोटे live conductor हमें टच करछु public supply रे from earthing metal कोन करबो ना current will flow in earthing सेतले कोन हबो ना current flow हो जो earthing through देकी flow हो जा बॉडी को पास करबो नै to
keep different parts of an electrical machinery at zero potential, they must be कौन हबो याद ताकू most हैला कौन ना याद करियो पड़िबो to keep different part of an electrical machinery at zero potential, they must be याद सेटा जेतो 0 point कौन हबो सेटा most be याद हेतिबा दरकार. If current entering and coming out of equipment is greater than dash, then earth fault circuit breaker break the circuit केतବେଳେ हबो जदि 5 मिली एम्पियर रु अधिक हबो then earth fault circuit breaker को से ब्रेक कर दबो ब्रेक सर्किट कर दबो. एटा कोडी आस्तिला ना डीएमआरसी रे क्वेश्चन आस्तिला. According to I rule 1956, when 500 volt is applied across every current carrying conductor and earthing for a duration of 1 minute, the minimum insulation resistance of low and medium insulation should be केते ओम मेगा ओम होबो ना 1 एम होबो. जानि पारलो. The minimum insulation resistance between conductor wire and earth is केते मेगा ओम ना 100 ओम मिलियन ना मेगा. तो minimum insulation resistance between conductor wire and earth is 100 mega ohm. तो earthing is required to protect against कहा प्रति हमको earthing protect करूची ना electric shock रु हमको protect करूची. Next point कौन कहला dash colored wire is used from grounding connection. जो grounding connection अच्छी आमे को कलर रो वायर यूज करूछु सेटा हला ग्रीन कलर रो वायर. जो ग्राउंडिंग अच्छी आमे ताको को कलर रो यूज करूछु ना ग्रीन कलर वायर यूज करूछु. Which color wire is ground wire that protect कौन करियो protect applicants from electrifier. जो applicants अच्छी from electrifier रो protect करिया पई आमे को प्रकार रो को कलर रो वायर यूज करूछु. से सेम क्वेश्चन ग्रीन नहले येलो. The amount of charcoal and salt needed for GI pipe earthing केते needed हबो ना चारकोल 10 केजी हेले सॉल्ट मध्य 10 केजी. चारकोल जेतिकी सेतिकी कोन सॉल्ट मध्य सेतिकी. चारकोल जदि हमें 10 केजी यूज करूछु सॉल्ट मध्य हमें केते केजी यूज करिबा 10 केजी यूज करिबा. तो एटा मन रखिथिबो द अमाउंट ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट नीडेड फॉर जीआई पाइप आमे केते 10 केजी चारकोल यूज करले 10 केजी कोन यूज करिबा सॉल्ट मध्य यूज करिबा. जानि पारलो. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जो नेक्स्ट पॉइंट अछि dash the value of earthing resistance for large power station. कौन कहला जो द 0.5 ohm the value of earthing resistance for large power station. जो large power station अछि सेठी हमर केते earthing resistance यूज होजी पचारिछि केते ना 0.5 ohm resistance रो. जानि परलो earth wire is connected to the कोडी ना ग्राउंड रे. कोडी कनेक्ट होजी earth wire टा is connected to the ground रे. तो कोन एठी आउथर रिपीट कर दो क्वेश्चन टा dash the value of earthing resistance for large power station. जो large power station अछि तार earthing resistance रो वैल्यू केते 0.5 ohm. large power station पई केते earthing resistance हम यूज करूछु 0.5 ohm. एटा मन रखथिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ते. हमरो large power station पई जो earthing हमें यूज करूछु earthing resistance रो वैल्यू केते ना 0.5 ohm. earth wire is connected to the कोठी ना ग्राउंड रे. ता moisture connect in the soil dash the earth soil resistance. moisture connect in the soil decrease the earth soil resistance. जदि moisture कोन हबो connect in the soil soil ले जदि moisture connect हैला dash the decrease the earth soil resistance. soil रो resistance कोन हबो ना decrease हे जिवो. जानि पारलो. नेक्स्ट पॉइंट जिबा
dash the three-phase generator is not grounded, and if single line to earth fault across the voltage of the other two healthy phase will be कौन होबो ना increase the three phase generator is not grounded, and if single line to earth fault occurs the voltage of the other two healthy phase will be कौन हला increase ହେଇଯିବ। Next कौन कहला ना the material used for the manufacture of ground wire is galvanized steel। तो जो आमर ग्राउंड वायर तैयारी होउची को मटेरियल रे ना galvanized steel रे तैयारी होउची। the material used from the manufacture of ground wire जो ग्राउंड वायर टा आमर अछि से ग्राउंड वायर टा को आमे तैयारी करिया पई को प्रकार मटेरियल यूज करूचु ना galvanized steel आमे यूज करूचु। जानि परलो। नेक्स्ट पॉइंट को जिबा। The permissible frequency variation according to Indian electricity rule केते प्लस माइनस 3%। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे। The permissible frequency variation टा according to Indian electricity rule हिसाब रे permissible frequency रो variation केते प्लस और माइनस 3%। जानि पारलो। आउ थर मन देख सुनो। The permissible frequency variation according to Indian electric rule हिसाब रे permissible frequency टा प्लस और माइनस केते परसेंट ना प्लस और माइनस 3% रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन। In pipe earthing the length of the pipe to be placed in earth is decided by कहा द्वारा डिसाइड करा जाए ना मॉइस्चर ऑफ द सॉइल रे केते परिमाण रो मॉइस्चर अछि। इन पाइप earthing the length of the pipe to be placed जो लेंथ ऑफ पाइप जो प्लेस्ड हेछि इन earth is decided by the moisture of the soil हिसाब से डिसाइडेड करा जाए। तो चारकोल एंड सॉल्ट इज यूज अराउंड द पाइप earthing कौन पाई डिक्रीज द earth रेजिस्टेंस। आमे जो चारकोल आउ सॉल्ट जो चारकोल आउ सॉल्ट आमे कौन पाई यूज करूचु ना डिक्रीज करिवा कौन earthing रो रेजिस्टेंस डिक्रीज करिवा पाई। चारकोल एंड सॉल्ट इज यूज अराउंड द पाइप earthing डिक्रीज earth रेजिस्टेंस। earth रो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करिवा पाई आमे कौन करूचु ना चारकोल आउ सॉल्ट को यूज करूचु। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला डैश इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट टेल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। कौन कहला earthing इज नेसेसरी को जिनिसटा नेसेसरी दरकार ना earthing इज नेसेसरी आमर earthing रहिबा निहाती आवश्यक। प्रोटेक्ट करिवो कोन पई ना टेल करियो बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर बिल्डिंग आ स्ट्रक्चर रे प्रोटेक्ट करिया पई earthing टा नेसेसरी। तो भाई मैंने वीडियो रे एतिकी थाउ। नेक्स्ट वीडियो रे आमे कंटिन्यू करबा कारण वीडियो लॉन्ग हे गले भल लागियोनी बोरिंग लागिवो। तो चलंतु संगे संग कंटिन्यू आ गोटे वीडियो भी आमे करबा। तो जो माने भी लाइव अच्छे से माने जॉइन निश्चित करिवे।